એપ્રિશિએટ કરે છે। ચાલો ફરીથી એ નજારો યાદ કરી લઈએ, ચાલો ફરીથી એ નજારો યાદ કરી લઈએ। શહીદોના દિલમાં હતી જે આગ તે યાદ કરી લઈએ, જેનાથી વહીને આઝાદી પહોંચી હતી કિનારા પર। બલિદાનીઓની આ લોહીની ધારા યાદ કરી લઈએ। 13 એપ્રિલ 1919નો દિવસ હતો। વૈશાખીનો પારંપરિક તહેવાર હતો। અમૃતસરમાં બધા લોકો આ વૈશાખીનો તહેવાર મનાવવા તૈયાર થયા હતા। ગુરુદ્વારાની બાજુમાં જ એક બગીચો હતો, તેનું નામ જલિયાવાલા બાગ હતું। ગામના લોકો પરિવાર અને મિત્રો સાથે ત્યાં ફરવા આવ્યા હતા। બીજી તરફ પંજાબના વધતી જતી હિંસાને રોકવા સૈન્યના કમાન્ડર જનરલ રિજનાલ ડાયલે મોરચો સંભાળવાનો હતો। તેણે અમૃતસરમાં વધતી હિંસાને રોકવા પોતાના શહેરમાં કર્ફ્યુ લગાવેલું હતું। પછી તેને એ ખબર પડી કે જલિયાવાલા બાગમાં લોકો વિરોધ પ્રદર્શન માટે ભેગા થયા છે। ત્યારે જનરલ ડાયલ 5:30 પોતાના સૈન્ય સાથે જલિયાવાલા બાગમાં આવ્યા। તેમણે સૈનિકોને બાગના દરવાજા બંધ કરાવી દીધા અને ત્યાં રહેલા લોકો પર કોઈ પણ ચેતવણી આપ્યા વગર ગોળીબાર કરવાનું ચાલુ કર્યું। લગભગ 10 મિનિટ સુધી ગોળીઓનો વરસાદ કર્યા પછી ભાગમભાગી થઈ ગઈ। ત્યાં પુરુષો સાથે સ્ત્રીઓ અને બાળકો પણ હતા। આ બાગમાં એક કૂવો હતો। આ કૂવામાં પડીને કેટલાક લોકોએ પોતાનું પ્રાણ બચાવવા વિચાર્યું, પરંતુ કૂવામાં પડીને તેમનું મૃત્યુ થયું। લગભગ 1000 લોકોનું મૃત્યુ થયું અને એટલા જ લોકો ઘાયલ થઈ ગયા। બ્રિટિશ સરકારે મરેલા લોકોનો આંકડો 380 બતાવ્યો હતો। પ્રશાસને આ હત્યાકાંડને દબાવી દેવાની બહુ કોશિશ કરી હતી, પરંતુ આ ખબર આખા દેશમાં ફેલાઈ ગઈ। બ્રિટિશ સરકારને પણ આ હત્યાકાંડ ખોટો લાગ્યો અને એને જનરલ ડાયરને તેમના પદ પરથી છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા। અમારી શાળાના ધોરણ 1 થી 7ના બાળકો આ ઐતિહાસિક હત્યાકાંડનું પ્રદર્શન ચિત્ર સ્મૃતિ કરાવી રહ્યા છે। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very bright morning to you one and all। अर्ज किए, चलो आज फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल की वो ज्वाला याद कर ले। बहकर जिसमें आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बेकसूरों के खून की वो धारा याद कर ले। ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर, ट्रस्टी मौलाना, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स and all my friends, today we are gathering here to witness the 76th Independence Day of India। We all know from 1857 to 1947, history has noticed some several revolutions and sacrifices of our great leader and freedom fighter, such as Quit India movement, Swadeshi movement, Dandi March, the Battle of Jhansi, the Jallianwala Bagh massacre। Arey, what is Jallianwala Bagh massacre? Don't you know the story of Jallianwala Bagh massacre? The Jallianwala Bagh massacre is also known as the Amritsar massacre, took place in 13 April 1919. A large peaceful crowd had gathered at the Jallianwala Bagh to protest British India, the Rowlatt Act and pro-independence act with Saifuddin Kishlu and Satyapal। Let's see a glimpse of Jallianwala Bagh massacre। Scene 1। पंजाब के एक गांव अमृतसर में सभी लोग एक छोटी सी सभा में बैठे थे और बैसाखी के त्योहार की तैयारी कर रहे थे, जहां अंग्रेजी फौज का एक आदमी आकर चेतावनी देता है। मेरा क्या होगा, मैं तो रात के 10 बजे मजदूरी करके आता। सट्टा मारो डॉक्टर, सट्टा तो हुकूमत चलाते हैं पूरे। हमें इन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी हम इन अंग्रेजों को हमारे देश से बदल सकेंगे। सुनो भाइयों सुनो, कल बैसाखी
अपने नेताओं और अपने नेता का भाषण सुनिए। सीन 2 बैसाखी का त्योहार पंजाब और हरियाणा में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार सिख लोग नए साल की खुशी में मनाते हैं। April 13, 1919. April 13, 1919. It was Baisakhi ka day, a harvest festival popular in Gujarat, Punjab and North India. Residents of Amritsar decided अंग्रेजी हुकूमत ने 2 काला कानून पास किया। जो दमन चक्र चलाया वो किसी से छुपा नहीं, पर यह दमन चक्र अंग्रेजों पे बहुत महंगा पड़ेगा। इस कानून द्वारा अंग्रेजी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, दशक में भय का माहौल पैदा करना चाहती है। रोलेक्स टैक्स इंसानियत के नाम पे कलंक है, कोई इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे वापस देना ही होगा, देना ही होगा। रोलेक्स टैक्स वापस लो, रोलेक्स टैक्स वापस लो। छोकराने बैठ को नहीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। इसी के साथ बेकसूरों को मरता देख उधम सिंह ने ये ओथ ले लिया कि अब वो इस जनरल डायर का खेल खत्म करके रहेगा। सीन 3 जनरल डायर अपना भाषण दे रहे थे।
जनरल डायर अपना भाषण दे रहे थे, जहां उधम सिंह अपनी बड़ी सी किताब में बंदूक छुपाकर बैठे थे। मौका पाते ही उधम सिंह ने अपनी बंदूक निकालकर जनरल डायर को 2 गोली मार दी। जनरल डायर को गोली मार उधम सिंह ने तो जैसे जग जीत लिया। और उसके पास जाकर अपनी जेब से तिरंगा निकालकर लहरा दिया। तभी जनरल डायर का एक आदमी आकर उसके हाथ से तिरंगा लेकर फेंकता है, लेकिन उधम सिंह के होते हुए तिरंगा कैसे गिरता? फिर क्या था, अंग्रेजी फौज ने बड़ी बेरहमी से उधम सिंह को मारा। मार खाते हुए भी उधम सिंह ने अपने हाथों से तिरंगा गिरने नहीं दिया। फिर उधम सिंह को अरेस्ट करके ले जाया जाता है। Scene 4, Udham Singh in court. उधम सिंह, तुम चाहते तो अपने देश हिंदुस्तान भाग जाते। जज साहब, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, उस मिट्टी के लोग पीठ दिखाकर भागा नहीं करते। जरूरत पड़ने पर सीने पर गोलियां खा सकते हैं। तुम चाहते तो हिंदुस्तान भाग जाते और सैकड़ों उधम सिंह बना सकते। जज साहब, जिस दिन आप मुझे फांसी पर लटकाओगे, उस दिन एक नहीं हजारों उधम सिंह पैदा हो जाएंगे। उधम सिंह, मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूँ। मंजूर है। जज साहब, मुझे आपका यह फैसला भी मंजूर है। मैं अपने देश के लिए एक नहीं हजारों फांसी के फंदों पर लटक सकता हूँ। इस तरह उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाते हुए हिंदुस्तान ले जाया जाता है। उधम सिंह एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान सलामी देते हुए दे दिया। Udham Singh or Sardar Udham Singh was a revolutionary freedom fighter of India. He was the one who took the revenge of India. We should proud to be an Indian. We should admire our fortune to have been born in the land of independent India. Now I would like to end our drama by saying few words that